Yes, recording has started. All right, thank you so much for everyone to join the session today. This is a collaboration between the Hypermode organization and the Institute of Emerging Careers. What we're trying to basically do is create pods of UX people, UI people, front end, back end, all in Web3 and crypto. And the idea is that these pods are self-containing and they can basically build Web3 products. So think about all of the advantages of Web3 from a blockchain perspective around provenance and tokenization, leading up to tokenomics. So all the smart contract work that happens on Ethereum via the Solidity programming language or on Solana via Rust, all of this can be coded in. And I've been in the crypto space since 2014, and with the premise that code is superior to humans, and it's an interesting argument to make. And code isn't superior overall, or code isn't superior in everything, but in certain things, code is superior. And the way to think about that is that when it comes to redundant activities, the same thing over and over and over again, code is superior. So think about it. When you want to calculate 5 times 83, you can do it in your head, or you can use a computer, which is powered by code. And you would use code to do those manual tasks. And so it's an advantage that we have when we think about code as a tool, as something that augments humans and makes us even more powerful. And so it's important that we rely on code. And the way I've been thinking about it, especially in the context of where I come from, Pakistan, where we have a lack of a system, right? People aren't held accountable, whether it's the police or the judiciary. Not everything is fair in Pakistan. The rule of law isn't applied equally. This applies to politicians or the establishment. And so this unevenness basically wreaks havoc. When things work in a system, then success and growth happens. And so I've lived, many years in the U.S., and you think about the U.S. Constitution. The U.S. Constitution is a system, and it was created 2 years ago, and that system has allowed the country to flourish. So in a way, you can think of it as code. I mean, maybe not computerized code, but it was human code, if you will, that basically in America, people agreed to that this is the law of the land. And that system created, equilibrium. It created balance between different people. So the institutions that I mentioned earlier in the context of Pakistan, if you think about the police or the judiciary or the politicians or the army, all of these departments, and many, many more, by the way, act in equilibrium in a balanced way, and the system works. So back to, okay, what does this all have to do with blockchain? Well, blockchain, in particular, Bitcoin, let's say, is a system. It's a system of money. No more than 21 million Bitcoins will ever be created. That's coded in. So you can't print money like the Pakistani government has done, the US government has done, and so many different governments all around the world have done. And so that system is what makes things super, super powerful. And more, if you think about your own personal perspective, would you trust, for certain matters, again, not for everything, would you trust code, a computer, or humans? I would trust for many matters like bookkeeping or ledger. I would, obviously trust a computer. And we've talked about this in this setting, but just as a friendly reminder, what is blockchain? In one word, it's a ledger maintained by a bunch of computers. And that ledger is what's valuable, right? And so, back to this, I appreciate you giving me some time to kind of share these thoughts as we build out the YouTube channel. And what I'm going to do is I'm going to hand it over to Muzammil, and Muzammil, maybe you can spend a minute or two, or just explaining, what the teams have been doing, the 3 teams, etc., and then give the opportunity for the teams to kind of talk through their work, update, etc.
and then we can do a Q&A at the end. So Muzammil, I'll give it back to you, but I'm really excited about the session and look forward to hearing from you and the students and their work. Thank you, Salah. So just a quick overview that what's been done so far. So we have two pods right now. One is around the real estate tokenization. That's based on Solidity, the Ethereum language, and the other one is also based on Ethereum, and that's more of an NFT marketplace. So in the real estate pod, what we have achieved so far is that it's basically we are treating one property as one asset. We are not tokenizing that right now, but for further feature building and all, we are having this session where the students will be discussing that how they can achieve tokenizing a property into multiple tokens. Yeah, so that's a very quick overview what's been done so far and why are we having this session right now. So maybe we can start off with the real estate pod first. So I'll be handing over to Nakshab. She's the person from the UX team for the pod, and she'll be sharing the updates that we have from the previous session so far. And if there is need, we can go into the detail of the Figma file if anyone requires, so that she can share the prototype of how it's been built and what are the features that we have right now. So Nakshab, could you please share your screen and start with your updates? Oh, Assalamualaikum, sir. I am just like sharing my screen. Am I visible? Hello? Yes, it is. Yes, it is. Okay. So far we have done the user research based on, just like Sir Muhammad said, that we have treated each property as a single NFT, and involving that we have done user research like very limited to that topic. So in the previous session we were asked to make a few changes, which was to provide multiple wallets, and which also include Google and Apple Pay. And this was not included because the blockchain team had some reservation that it cannot be achieved to what we are trying to achieve right now. So maybe we can add it later. So the few wallets we have a Alchemy Pay and Moon Pay and Trust Wallet, and etc. And another change that Sir Salah asked us to make the real team was that we have to like give this CTA a wallet and a connect option, which I still don't really understand, because I think a CTA should have a single purpose and it should either be like connect wallet. So I did wanted to ask Sir Salah about that, what the purpose of this CTA should be, because I think it's very confusing that we're using a slash in a CTA because it should lead to a single destination. It just confuses users in my point of view. And while I was conducting the usability study, I did get a lot of questions like why there's like a slash to it. So I wanted to ask some opinion on that. And in the process, we are expanding our research to making, like as we were discussed in the previous session, that each property should have multiple tokens. So we are trying to do user research that how it can be beneficial and how we can establish that. And we are also ideating to make a native app of this. So far, this is like our updates. Yeah, hey, that's a great update, and thanks for all the hard work. Thank you. Can you maybe also go into a little bit of detail in terms of what you did from a real estate tokenization? Just spend just a bit more time and maybe go into Figma and spend one or two more minutes explaining a bit more detail, and I'll answer some of the questions and highlight the question that you asked me earlier. Highlight it again in the context of the details, and let's just discuss the right solution there. Okay, so I'll just like run the prototype. So I'll be showcasing the main user flow, what we designed. Like we've treated each property as an NFT. So like we have made like a simple user flow for user to like buy a property. Just take a minute. Nakshab, sorry to cut you. I guess your screen isn't being shared. Can you please share your screen also? Oh, I'm really sorry. Thank you.
Is it visible now? Yes. Yes, sir. Okay. So far, like this is the landing page we made. We will be dealing with like these three for now. We have made this user flow. Okay, so if we take a property and we have these information that must be needed for the complete user flow. So we buy property and we confirm the transaction, and this transaction is done. Another thing is that we have to verify each user when they come to buy property or sell property. They will be like, for buyers, the verification is not really necessary, so they just have to connect wallet. So they'll be like connecting wallet, and that's it. And if you want like to sell property, you have to fill like a proper form to it. And yes, like a form like this, and it will be filled, providing the details, and the user will be verified. This verified tick will show that the user is verified, and the overview of each, like your properties that you've bought, or it further like the tokens you have bought. We display all of the data over here, and in the profile we can again like have the summary of what the user has. You can edit profile and stuff. And all of this verification will be done by the admin. And the admin will be doing the verification. So this is the dashboard of the admin. We have properties, sellers, the settings, and everything. So whenever the when the user fills the form, admin gets the data, and then he chooses like according to the information provided. If something is missing, they can comment like this particular thing is missing, so we can have this dashboard. This is like so the user flow so far. And about the questions, yes, about the question. The thing is that you asked us in last session that there should be like a slash in the CTA, which is like here. So the wallet and connect, I don't understand like the purpose of it actually, because I think a CTA should have a single command in which we click, because the slash is giving us option, which should be, we can like make it two CTAs instead of one if we want to perform like different functions. And if we want them to perform a single function, I think we should come up with a term which can be like a single term we can fit in single CTA without the slash. That's what I think. Hey, I was going to answer that question, but let me just first share some overarching thoughts. Again, just मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, अभी भी ये शेयर कर रहा हूँ कि ये आप लोग जो काम कर रहे हैं, the work is just phenomenal. It's amazing work. The ground you guys have covered, right? And just amazing work. And very excited to see the progress. So just congratulations to you and the rest of the team on this. I'll tell you what I'm trying to do. And I think you're highlighting an important point, and there is a concern that you're raising that is actually legitimate. I'll tell you what I'm trying to do from a business perspective. I'm trying to bifurcate, or I'm trying to separate two experiences. There is a audience that is crypto native, and they're very comfortable connecting with a wallet. And they will connect with their Metamask wallet and a few other wallets like Phantom, etc. And they're very, very comfortable with that. There's another part of the audience that doesn't want to do anything with wallets. Okay. Right? And they want to just connect like through PayPal or Stripe. And those are some of the other things that we can also start thinking through.
So what I'm trying to do here is that in a way, again, let me not get into the user experience territory, which you can sort through. What I'm generally trying to do is I'm trying to create two experiences. When people come, they can go through a wallet kind of journey, or they can go through the connect journey. I totally get your point, but I think for that we should come up with a term which is like a single term which will cover both the perspective. I think like join our give like a single CTA that join our website and like sign up. That like we have like one term like sign up which covers a lot of term. Like you can sign up with Google, you can sign up with Facebook and stuff like that. So we can also like come up with a term, single term. Yeah, I think it's let me be at least a little particular here. In my mind, maybe there are two CTAs at the top. One is called wallet and one is called connect. And we can play around with the second. Wallet was a word we can't change because that's the standard nomenclature, that's the standard terminology that's used in the industry. Everyone refers to it as a wallet, right? And you can maybe even look at like go to OpenSea and look at their experience. Look at some other Web3 sites and look at their experience. And then there's a second, and that's related to the wallet, journey, right? But then there's a second aspect, which is around just connecting. It's actually like, eventually it's going to be the same. But shuru mein na, like in the beginning, that experience is slightly different. Like, hey, I'm going to connect via Gmail or Facebook or PayPal or whatever. Or wallet, I'm going to connect through that kind of, so that initial thing, we have to give them like a very guided tour, if you will. And that's what I'm trying to design here. Okay, so maybe we can like tackle it with a little bit of onboarding within the site, that you have these options. Like to tell the user, like you can like either like you have these options, so whatever you want to go through, and have like two CTAs as well. Is it me or is Nakshab coming in and out? I have no idea. Am I like audible now? It's coming clear for me. Hey Nakshab, thoda sa connection it got bad. Can you repeat what you just said? Oh, I said that we can like include a little bit of user onboarding. That we give them like you have these options right now, and then we can have like two CTAs. Am I still not audible? Yeah. So if you go back to your screen, right? This is the way I'm thinking about it, and then I'll ask you to just leave it with that. Where it says wallet or connect, right? Yeah. Maybe you have, instead of self property, you have wallet as one CTA and then connect as a set. Yeah, we can do that. Yeah. So over here, right at the beginning, right? People, okay, if people understand wallet, they're going to click wallet. If they're going to understand something else, connect, they'll connect, and connect, they'll go. So then the onboarding experience that you're talking about makes a lot of sense, right? Okay. Thank you, sir. Thank you for the time. Zaman, can I ask you to just come up with a little bit of a budget and let's just push this project forward with a couple of other people on it? And no, absolutely. You guys are doing amazing work, right? So Zaman, let's just think through a little bit of a budget, and let's just get 2 or 3 people to continue to pull the thread on this, right? Some of the action items from before, but also, like what we just talked about, and we didn't talk a lot more about the native app or even a mobile app. Just kind of thinking through how the team wants to do that. I think those would be interesting threads to kind of pull. Sure. So basically, Fazila from Frontend had done some research on that, I guess, and she would be sharing that in her bit. Okay, perfect. Yeah. All right. So is there anything else you want to cover on a UX for this pod, or shall we move on to Fazila? I can't think of anything right now. Let's keep going. Sure. So Fazila, could you please share your screen and start with your presentation? Okay, sir, I'm sharing. Hello, Fazila. Sir, am I audible?
Yeah, we can hear you fine. So, sir, basically my task was to research how to convert, how can we convert our website to mobile native apps. So the basic requirements for converting our website to mobile native apps are Android Studio capacitor tool and the React app that we have to convert. And here are some steps that we need to follow for converting our websites to mobile apps. And the first one is creating the React app, and we can create by simply by using npx create React app and start it by npm start, and we can design it according to our requirements. And after designing our website, we have to convert it, we have to create a build folder, because whether we have to deploy our website or we have to convert it, we need this folder. So after creating build folder, we need to install the capacitor tool. Basically, capacitor tool provides us the facility to convert our website into mobile apps. And the source for capacitor tool is the responsive view of our website. Basically, responsive view means our website is not only working accurately on the desktop, but it also work on different screen sizes like tablets and mobile phones. So capacitor simply takes the responsive view of our website and convert it into the Android view. And after installing capacitor, we need Android Studio, and we can install it, and we can open our app as an Android app. After opening our app in the Android Studio, we need to generate the APK file. And we can, after generating the Yeah, can I APK ask file. you? Yes, Sorry to sir. jump in. So far, a really good update. This looks really interesting and solid. But I have a couple of questions because I'm a little behind on the tech. So maybe I'll ask the two questions. So that way, मुझे थोड़ी सी मेरी जो my blind spots are covered a bit. So my first question is, how hard or easy is it to work on React? And like, is it, I think it's JavaScript based. Just give me a sense of that, like how hard. That's the first question. And then the second question, you're talking about the Android app, but we also want to work on the iPhone app, right? So was that considered as part of this analysis? Okay, so basically the answer of first question is React is basically based on JavaScript. So if we have strong knowledge about the JavaScript, React is not really tough. So we have to cover the basic concepts of JavaScript, and then we have to learn some UIs, and after that we can go with the React. And the second question is Android app. Basically, I have reside on the Android, but we can also run it on the mm, uh, iPhone and other. So we have to generate the files according to that. Okay, that's really good information. Thank you for the background. Um, I, I'll ask you to do two things. One is I want you to Google templates. Sorry for the background noise. I want you to Google templates, and basically, like as an example, look at React templates and see if React. they can be used to accelerate this effort. If we have to buy a template, Muzammil and I will happily buy it for you also. So just look at that. And number two is work with the UI team, because the UI for iPhones and the UI for Androids are different. So Yes. that difference needs to kind of, show up. But overall, great. And this is good stuff. Thank you, sir. So I will Google it. So can I continue? Yeah, please continue. Okay. So after generating the APK file, we can test it on some simulate Android simulate, or we can copy it on our mobile phone to test it. And after testing it, we can deploy it on Google. Okay, and the next task was to integrate multiple wallets like Alchemy, MoonPay, and Trust, Coinbase, Google Pay, and Apple. But there was some pending work on the front end side, so I have to cover it first. And I just started working on the integration, but
the only wallet that is connected to our website up till now is Metamask, and I am working on the others. That's great. This is great. Nice work. Yes, so that's it from my side. Can you send me this PowerPoint when you get a chance, please? Actually, Yes, if Muzammil, you can get me all the PowerPoints, that would be great. Right, I'll be doing that right after this meeting. Yeah, maybe put it on SharePoint. Thank you. Sure. So is there anything else we need to share on front end, or shall we move on to the blockchain bit? Let's keep going. Nice work. Okay. Great. Thank you, Fazila. So basically, Salah, for the blockchain end, you had some questions regarding what's the difference between multiple Ethereum tokens, ERC-721 or 20, and the others the blockchain guys had been mentioning. So we have Anwar with us, who will be sharing that information with us. So Anwar, could you please share your screen and start with your presentation? And you are on mute, so if you could. अस्सलाम वालेकुम सर सर मेरी Hello, स्क्रीन hello. विजिबल है It's only black. सर वेट सर kindly let me know now. Sir, is it I can visible? see it. Yep. ओके तो सर पहले मैं आपको थोड़ा जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसको ओवरव्यू देना चाहूँगा। अभी तो खैर कोई मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है बट ओरली आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँगा उसके बारे में। तो सर जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि एक प्रॉपर्टी को हमने टोकनाइज कराना है एज अ एनएफटी। तो उसके लिए हमने एनएफटी इसका ERC 721 का स्टैंडर्ड यूज़ किया और उसके साथ हमने एक मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो पहले हम एनएफटी को मिंट करवाते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एनएफटी वाले में और अगेन उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र करें मार्केट प्लेस की तरफ, जहाँ पर सेलर उसको लिस्ट करवा सकता है और उसी के साथ फिर हमने बायर की फंक्शनैलिटी दी है कि कोई भी आता है उसको परचेज़ करेगा। लेकिन उसमें भी हमने कुछ चेक्स वगैरह लगाए हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसको अगेन बाय ना कर सके और जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है वो उसको लिस्ट ना करवा सके और इस तरह के कुछ और मज़ीद चेक्स हैं। और सर अगर इस हवाले में आप मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो बेहतर, वरना फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की स्लाइड्स की तरफ मूव करता हूँ। No, good update. Keep going. ठीक। सर जो अभी आपने हमें दूसरा टास्क दिया था तो उसमें जो बेसिक थीम थी आप चाह रहे थे कि एक प्रॉपर्टी एज ए एनएफटी हो और उसकी मल्टीपल कॉपीज हो, ऐसी है ना सर? हेलो। One NFT and multiple copies. Yes, थोड़ा सा sir. explain करो what you're thinking or what I was thinking. जी सर, अभी एनएफटी जो है नॉन फंजिबल टोकन है। अगर हम जाते हैं इसके ईआरसी के अपने 3 स्टैंडर्ड जो बहुत ही पॉपुलर हैं, ईआरसी 20 इस तरह जैसे कि फैट करेंसी। तो सर मैं इस तरह प्रेजेंटेशन को आगे की तरफ मूव ऑन करता हूँ तो इसमें इंशाल्लाह एट द एंड तक आपके तकरीबन क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। Perfect. ठीक। Sounds good. Let's do it. जी सर, तो विजन जो आपका था, हम चाह रहे थे कि टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी गिवन अस बाय अ ब्लॉकचेन एंड क्रिएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट बायर्स एंड सेलर्स के, क्योंकि इससे पहले भी देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है तो उनके पास इतने मौके नहीं थे। वो यही कर सकते थे कि एक टेनेंट को ला के प्रॉपर्टी में रख लिया तो उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, या तो फिर से जो घर है उसको मॉर्गेज करवा दिया, उसको फिर सेल कर दिया। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम उसे भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो सर उसको अचीव करने के लिए उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लाज़मी है कि हम जिनसे हमें उनके बारे में पता हो। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम ईआरसी के स्टैंडर्ड्स को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं वो किस तरह ऑपरेट करती हैं, या फिर जो वाइट लेवल एक्सचेंजेज़ हैं, और फिर हम उसके बाद जानेंगे व्हाट आर एएमएम्स, एएमएम्स क्या हैं और वो काम किस तरह करती हैं। ठीक। तो सर ईआरसी बेसिकली स्टैंड करता है इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, और जो इसका सबसे पहला स्टैंडर्ड है ERC 20। ये सर सेम वर्क करते हैं जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे $1 का नोट आपके पास है और $1 मेरे पास है। अब ये है मल्टीपल है, लेकिन जो ईच डॉलर है उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि अगर मेरे पास 1 है आपके पास भी 1 है तो ऐसे नहीं कि जो मेरे पास है वो 1 पॉइंट समथिंग और जो आपके पास है वो उससे कम हो। दोनों सेम वैल्यू होल्ड करेंगे।
तो ERC20 में हम लोग इसको जब डिप्लॉय करते हैं तो ये विद 18 डेसिमल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो हम इसके बाद आते हैं फिर ERC721। सर ERC721 जो हमने यूज़ किया अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी, तो इसमें एक ये भी एज ERC20 मैंने ट्रीट कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि इसमें मेटा डाटा होता है, जो NFT होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि एक गली में 2 घर हैं, तो दोनों घर नॉन फंजिबल है क्योंकि एक घर दूसरे घर से मुख्तलिफ है। उनकी जो है प्रॉपर्टी उनकी सेम नहीं है, उनकी वर्थ सेम नहीं होगी, या उनका जो एरिया है उसमें फ़र्क होगा। तो इस लिहाज से जो NFT हैं वो सर इक्वल नहीं है। एक NFT दूसरी NFT से ज़रूर मुख्तलिफ होगी, और एक NFT को एट अ टाइम ओनली 1 पर्सन कैन होल्ड अ स्पेसिफिक एसेट। और उसके बाद हम आते हैं ERC 1155 के स्टैंडर्ड की तरफ। तो सर ERC 1155 का जो स्टैंडर्ड है, इसको तो फ़िलहाल जो हाल ही में इस्तेमाल हो रहा है वो गेमिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ERC 1155 जो है ये कम्बिनेशन ERC20 और ERC 721 का, जो ईच टोकन इज इन इटसेल्फ इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स ओन सप्लाई। ERC 1155 हर टोकन को एज ए ERC20 ही ट्रीट करता है, बट देयर इज अ कैच। वो कैच ये है कि वो मेटा डाटा को स्मार्टली यूज़ करके वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि इसमें से कौन सा जो टोकन है वो नॉन फंजिबल है और इसमें से जो कौन सा टोकन है वो फंजिबल है। अभी अगर मैं आपको एक बहुत मशहूर गेम में इस दो जो रॉयल पबजी, तो उसमें सर अभी जब हम लोग जाते हैं किसी भी गेम को हम उठा के फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, तो गेम में हम स्पेसिफिक जब कोई लेवल वगैरह क्रॉस करते हैं या कोई अचीवमेंट होती है तो हमें उसके कुछ कॉइन्स मिलते हैं। तो वो कॉइन्स मल्टीपल हो सकते हैं और ईच कॉइन की वैल्यू सेम होगी। तो उसी गेम में हम लोग ऐसे करवा सकते हैं कि सपोज हम लोगों ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो उस टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी होगी उसको हम लोग एज अ NFT ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरह भी ये स्वॉर्ड जो बनी है सर, स्वॉर्ड इज इक्वल टू NFT, मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो ट्रॉफी है वो एक NFT है। लेकिन हम वहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 ट्रॉफीज हों, लेकिन वो तीनों ट्रॉफीज यूनिक हों, या तो एक ही ट्रॉफी को हम तीनों को बांट दें एज अ परफॉर्मेंस वाइज। तो सर देखें स्वॉर्ड इक्वल टू NFT, और NFT की मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती हैं ERC 1155 के स्टैंडर्ड में, ठीक है। Yeah, I get it. एनी क्वेश्चन सर, या मैं फर्दर मूव करूं? Yeah. No, Okay. this is I'm very impressed, by the way. This is amazing. I've learned a lot from what you've said. And isme the example I'm thinking of, and tell me if I'm thinking about it correctly. If you go to the prior slide, the example is that I take 5 different houses and I tokenize each house. So Yes. the token might be the same, but the houses are different, right? And I think that's the thing, that where you combine the 20 and the 721 contracts to make something like that happen. Am I thinking about it correctly? So there's a slight difference. The houses will be the same, but the owners will be multiple. Like 3 people can hold a single NFT in ERC 1155 standard. We can distribute the ownership जिस तरह के हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आधे टोकन्स को कि वो टेनेंसी राइट्स होंगे और आधे टोकन जो होंगे वो ओनरशिप के राइट्स होंगे। क्या आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसको मजीद ट्रेड कर सकते हैं। So I think maybe in the next meeting, right, walk me through this in a bit more detail. I'm not visualizing what you're saying. So create a couple of slides, walk me through it a bit. Okay? If there's any YouTube videos that explain some of this, send it to me. I can do research offline. The one example that I'll ask you to think about is, I don't know how the 720 or the 1155. So I don't know how the 721 and the 20 play with each other. But I'll give you an example, right? Like think about like the exact same 4 houses. They're exactly the same. We create 1,000 tokens for each house. So we have 4,000 tokens. But the thing is that some of these tokens are attached to a different house. So we have to, anyways, I think this is something to think about, but keep going. This is good. Okay, sir. तो सर फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो बहुत ही फेमस है आजकल, जैसे यूनिस्वैप है, तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि कोई अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, जिस तरह ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो वहाँ अगर हम कोई अपनी ट्रेड करवाना चाह रहे हैं, तो जब पहले मैं अपने एसेट को सेल करने के लिए वहाँ पे लिस्ट करवाऊंगा, तो मैंडेटरी है कि पहले मैं अपनी एसेट की ओनरशिप जो वहाँ की जो एंटिटी है जो उस मार्केट प्लेस को ऑन करती है, मैं उसे ट्रांसफ़र करूँगा।
तो मतलब एक किस्म से ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी सर, टंग ट्विस्ट होगी थोड़ी सी। सर द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वी हैव कंट्रोल ऑन आवर फंड्स, हमारा जो भी फंड होगा वो हमारे वॉलेट में सेव होगा, कोई केवाईसी नहीं है, जस्ट सिंपल हमें हमारा जो वॉलेट एड्रेस है उससे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और जो प्राइसेस होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में उन्हें रेगुलेट किए जाते हैं, लिक्विडिटी पूल एल्गोरिथम यूज करते हैं जो कि है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, और ये फास्टर होती है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से, और इनकी फीस थोड़ी लो होती है, लेकिन बट सर फिर यहाँ भी थोड़ी डाउन साइड्स भी हैं कि समटाइम्स हमें लो लिक्विडिटी मिलती है, लिक्विडिटी इन अ सेंस के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने फंड्स लॉक किए होते हैं जो कि मार्केट प्लेस को हेल्प करते हैं फंक्शन करने में, क्योंकि जैसे ही मैं अगर जाता हूँ मैंने कोई एसेट मैंने स्वैप करने, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कोई दूसरा जो है सेलर मिले, ताकि हम जो म्यूचुअल टर्म्स पे अगर हम लोग कंडीशन पे हम दोनों राजी हैं तो फिर उसके बाद ट्रेड जो है वो कंफर्म होगी, वो ऐसी चीज़ नहीं होगी सर। मेरे पास जो एसेट है वो मैंने पूल में पुश किया, और पूल से जो मैं जो भी एसेट परचेज करना चाह रहा हूँ वो पूल मुझे वो ट्रांसफर कर देगा, और इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है सर, Yep, क्योंकि एक हमारे second. पास। Can I jump in? Sorry. यस सर। Yeah, again, this is really amazing. I'm impressed. So sorry, मैं भी excited हो रहा हूँ. This is really good stuff. Where did you learn all of this? How did you learn all of this? So I learned it all from IEC, our instructors, and from YouTube. But oh, okay, thank you. I appreciate that. And you know, this message is for you and everyone else, right? This is what we're doing here, guys, like team, right? Okay, if we push each other, this is how we learn, right? There's some new people here on this call who are in the process of learning some of this, and a lot of this is going to be French to them, and they're not going to understand what an automated market maker is. But Anwar, did you think 3 weeks ago that you would understand what an AMM is? No, sir. And is it a hard concept? Yes, sir. If we don't know something, it's hard, but as soon as we know it, we can say it's a piece of cake. This is the lesson that I want everyone in this call to understand, that nothing we do is hard. I didn't know about AMM 6 months ago. I've been watching like literally dozens of videos to understand this. And it's an amazing, beautiful concept, and it's going to change, I think, a lot in the world. And you're going to see that. But the broader point here for the group, before geeking too much out on blockchain, is that all of you are learning, right? And that learning, if we can guide you, right, we can learn together, and we can build together, and we can, change Pakistan, right, along the way. But Anwar, the question you didn't answer, sorry, was where did you learn specifically about DEXs and AMMs? Like, how did you learn about that? So I told you, to be honest, about DEXs I learned about it on YouTube. We have some overview, क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर उमर अकील, उन्होंने हमें कुछ लेक्चर्स दिए थे DeFi पर, तो या उस वजह से कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में काफ़ी हेल्प मिली, तो YouTube से मैंने सीखा सर, जो आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Okay, all right. By the way, take my WhatsApp from Muzammil and send me videos that you like, that you think I should watch, and I'll try to watch them also. Okay, sir. But keep going. Good update. जी, तो सर हम लोग जो बात कर रहे थे डाउन साइड्स की, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के डाउन साइड की। तो डाउन साइड इस तरह के सर समटाइम्स हमें लो लिक्विडिटी मिलती है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं तो उनके जो फंड्स लॉक होते हैं, ये उनकी बात हो रही है, उन्हें लो लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि जब मैं आ रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ जो कि पहले से पूल में काफ़ी एक्सेस अमाउंट में, तो जैसे मैं मज़ीद उसको पुश करता हूँ, तो जो एसेट वहाँ पर पहले से लॉक होगा, मौजूद होगा, उसकी जो प्राइस है वो ग्रेजुअली लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का एल्गोरिथम काम कर रहा होगा, जो कि उसके रेशियो को 50-50 रख सके, मार्केट को रेगुलेट कर सके। और इसमें भी हम अब एक जो हमारे पास रुकावट आती है कि अभी जिस तरह इथेरियम है, सोलाना है, और भी इस तरह काफ़ी ब्लॉकचेन्स हैं, तो इसमें एक हमारे पास रुकावट ये आती है कि एक चेन का जो टोकन है, वो हम दूसरी चेन पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक? एक चेन का जो एसेट है, कोई भी डेटा है, कोई ट्रांज़ैक्शन जो है वो प्रोसेस हो रही है, तो वो स्पेसिफ़िक चेन तक जो है वहीं पे लिमिटेड रहेगी। लेकिन इसके लिए फिर बीच में आते हैं ब्रिजेज़। ब्रिजेज़ हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक चेन से दूसरी चेन पर या तो टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो फिर और कोई मतलब डेटा की जो हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं दूसरी चेन के साथ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सर अभी हम पढ़ेंगे हल्का-फुल्का ब्रिजेज़ के बारे में।
जैसे नीड मैंने सर आपको बता दिया कि हमें अलाउ करते हैं टोकन और डेटा को सेंड करने में दूसरी चेन की तरफ। just to engage the crowd, मैं जरा एक सर्वे पूछता हूँ. For people who do not know what a bridge is, please raise your hand in the chat. I just want to get a sense के कितने लोगों को bridge का नहीं पता. Interesting. Thanks for interacting. So again, just very quickly, I'll give a 30-second view on bridges, but or let me jump in there first. अगर आप think of blockchains as different worlds. एक world हो सकता है gaming world हो सकता है, एक finance world हो सकता है, and एक छोटे-छोटे worlds भी बन सकते हैं. हम एक अपना एक IEC का world बना सकते हैं blockchain के ऊपर. Right? हम अपने friends जो हम ये projects कर रहे हैं, हम अपना world बना सकते हैं. But then you have to connect the worlds because it's not just they're going to sit in isolation, right? So when you connect the worlds, how do you connect them? And that's the concept of bridges, right? कि अगर आप एक से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, why can't you do it? And so that's the concept. But again, Anwar and team and the people who know this from the IEC team, amazing. Like these are all concepts that you're learning, and just keep building, guys. So keep going, Anwar. Nice update. थैंक यू सर. तो सर ब्रिजेस के साथ भी कुछ इश्यूज हैं क्योंकि सिंस हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन भी अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. हम इसकी जो मजीद रेवोल्यूशन हम इंशाल्लाह देखेंगे अगले 5 से 10 सालों में कि अभी भी जो इश्यूज है वो भी ओवरकम हो चुके होंगे. तो सर ब्रिजेस में हमें इशू ये आता है कि जो ब्रिजेस हैं दे मस्ट हैव एन एंटिटी बिहाइंड देम, कि उनके पीछे कोई ना कोई एंटिटी होनी चाहिए जो कि उन्हें कंट्रोल करे, रेगुलेट करे. ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है तो जब अगर ब्रिजेस सेंट्रलाइज है तो इशू क्रिएट हो रहा है, कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. और ब्लॉकचेन ब्रिज इसमें जो मेजॉरिटी ब्रिजेस है सर वो सेंट्रलाइज्ड है, और इसकी जो डाउन साइड है सबसे बड़ी स्केलेबिलिटी के लिए जो इशू बनता है वो इसकी ट्रांजैक्शन टाइम है, वो बहुत स्लो है. अगर आप सिंपल कोई भी आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी चेंज हो रही है तो उसके लिए मिनिमम इसके 10 मिनट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी जो लगते हैं जो लोगों के अपने एक्सपीरियंस है वो रेडिट वगैरह पर शेयर करते हैं 4 घंटे लगते हैं, किसी के 1 दिन भी लगता है. तो इस तरह के कुछ इश्यूज आते रहते हैं. तो सर ये जो अभी जो हमारे पास फेमस ब्रिजेज है, बाइनांस ब्रिज है और मैटिक ब्रिज है. सर बाइनांस जिस तरह आपको ही पता होगा बाइनांस फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो है एक्सचेंज है. उन्होंने भी काफ़ी उनका जो है किरदार है ब्लॉकचेन की और डिफाई की इसमें एक्सचेंजेस में, लेकिन वो फिलहाल फुली और डिसेंट्रलाइज नहीं है. और इसके अलावा मैटिक ब्रिज है सर, जो मैटिक ब्रिज क्रिएट करने का पर्पस था वो ये चाहते थे कि पॉलीगॉन चेन वाले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी चेन की तरफ डाइवर्ट कर सकें. और भी काफ़ी सारे हैं सर, अगर हम इस पे R&D करें तो हमें काफ़ी कुछ और भी मिलेगा. Nice. और अब ठीक है. अभी हम आते हैं जी सर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की वर्किंग के बारे में. ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा हम इसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि जो सर अनलाइक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं, तो वहाँ पर जब हम अपना कोई भी एसेट हम उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमें पहले अपने फंड को लॉक करना पड़ेगा दूसरी अथॉरिटी के पास, और उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें दूसरा ट्रेडर ऐसा कोई मिले कि हम दोनों म्यूचुअल टर्म्स पे हम लोग एग्री करें कि अगर मैं एक एसेट बेच रहा हूँ जिस प्राइस पर जिस क्वांटिटी पे मैं बेच रहा हूँ, अगर वो उसी मतलब प्राइस और क्वांटिटी के साथ मिलता जुलता मुझे कोई दूसरा एसेट दे रहा है तो उसके बाद ही ट्रेड कंफर्म होगी. लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हम लोग लिक्विडिटी पूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. लिक्विडिटी पूल्स भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन वहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने फंड्स लॉक करते हैं और उसके अगेंस्ट वो लोग जो है लिक्विडिटी से मतलब इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं. और लिक्विडिटी पूल को मैनेज करने के लिए उसमें जो है मिसाल के तौर पे कोई मतलब जो प्राइस के मार्केट क्रैश ना कर जाए, प्राइस सेम रहे या मतलब एक बैलेंस कायम रहे 50-50 का. तो जितना हम लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे उतना महँगा होता जाएगा जो भी एसेट वहाँ पर मौजूद होंगे, और जितना हम उसको एसेट बेचेंगे मतलब हम पुश करेंगे एक पूल के अंदर तो उतनी जो है सस्ता होता जाएगा. क्योंकि जितनी लाइक सर वो एक बहुत अच्छी सेइंग है, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ उसको, और डिमांड के मुतालिक कुछ था. सर व्हाइट लेबल डेक्सेस का आपने हमें कहा था. व्हाइट लेबल डेक्सेस ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे भी जितने भी देखें सॉफ्टवेयर वगैरह मौजूद है तो सारे ओपन सोर्स हैं, हम उनका कोड देख सकते हैं, हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो गिटहब है, विंडोज़ है, मतलब बड़े बड़े जितने भी जायंट सेटअप है तो उनका कोड तकरीबन और गिटहब पर ओपन सोर्स पड़ा हुआ है. सर व्हाइट लेबल एक्सचेंज मतलब जो अभी एक्सचेंजेस मौजूद हैं तो हम उसी कोड को यूज़ करते हुए हम उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके जिस तरह आप हमें कह रहे थे कि बनाना चाह रहे हैं एसेट टोकनाइजेशन को, एनएफटी की मल्टीपल कॉपीज़, तो उसी के अंदर वो जो है स्वैपिंग हो रही है और वो ये सब और चीज़ें.
तो सर वहाँ पे हम लोग वाइट लेबल मतलब जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, हम किसी दूसरे की सर्विस यूज़ करेंगे। सर्विस जो पहले से क्रिएट हुई है ताकि हमें मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट से हम बच सकें और जो मैनेजमेंट होती है। इसमें जो सर फिलहाल जो चल रहे हैं एग्जांपल हैं जो मतलब फेमस है, चेनअप है, बाइबिट क्लाउड है और सेम और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, ये सर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसको थोड़ा समझने में भी माइंड जो ट्विस्ट हो गया था। तो सर जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स होते हैं, पहले मैं आपको ये स्लाइड रीड करके दिखाऊंगा। ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल रिप्लेसेस द ऑर्डर बुक दैट इज प्रेजेंट इन कन्वेंशनल एक्सचेंजेस वेयर लिक्विडिटी इज गिवन बाय बायर एंड सेलर ऑर्डर। सेम सर जो चीज़ हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आ चुके हैं। A pooled pot of tokens using an algorithm that determines how expensive an asset should be based on how much of there is. It enables traders to purchase and sell certain asset tokens. Since there are fewer of them, the price of the asset they purchase rises. सर x टाइम्स y इज इक्वल टू k। मिसाल के तौर पे मेरे पास ईथर्स हैं और आपके पास कोई और करेंसी है, हम दोनों उसको पुश करते हैं एक पूल में, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद कोई भी आ गया, सपोज सर मुजम्मिल आ गए, तो उन्होंने लाइक 50 ईथर्स के, चलो भाई मुझे ये स्वैप करके दो, मैं एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ। तो जब सर मुजम्मिल उसे पुश करेंगे तो ऑटोमेटेड मार्केट देखे मेकर जो है वो पहले उसको कैलकुलेट करेगा, उस पर जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई करेगा कि ये जो अभी आ गए तो अमाउंट में ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जिसका जो कॉन्सेप्ट है जो के है प्रोडक्ट, उसको उसकी तरह बरकरार रखने के लिए मुझे कितने इसको देने चाहिए और कितने मुझे रखने चाहिए। तो सर उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँगा कि इस तरह के मतलब वो मार्केट की जो प्राइस है वो उसी को रेगुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ अगर हम दे रहे हैं, अगर वो अमाउंट में ज़्यादा हो रही है तो पीछे कैलकुलेशन करेगा कि मैं कितनी लूँ और इसको जो दूसरा सेट है उसको मैं कितना प्रोवाइड करूँ कि जो मेरा जो 50-50 का रेशियो है वो भी कायम रहे और जो स्वैपिंग का काम है वो भी सक्सेसफुली हो जाए। और सर फिर जो आपने हमें जो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव। makes perfect sense. थैंक यू सर। तो सर जो उसका जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव जो आपसे अचीव करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें हमने सिंपल 721 को यूज़ किया है, जो कि हमें फंक्शनैलिटी देता है कि एट अ टाइम सिर्फ सिंगल ओनर उसको ऑन कर सकेगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है कोई भी डिजिटल एसेट है, लेकिन जो हमारा काम था वो रियल एस्टेट के इर्द गिर्द ही था। ठीक। तो सर जो अभी आपने जो हमें मेन ऑब्जेक्टिव दिया था मल्टीपल टोकन्स, तो सर उसके लिए हम ईआरसी या तो हम ईआरसी 20 यूज़ करते हैं या हम ईआरसी 1155 यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम ERC20 यूज़ करते हैं तो सर वो थोड़ा काफ़ी अलग उससे काम हो जाएगा। वो ऐसे होगा कि हर जो टोकन होगा उसकी कीमत सेम ही होगी। लेकिन एनएफटी जो है, हम नॉन फंजिबल टोकन है, उसको डिफरेंट एंटिटीज़ होल्ड कर सकेंगी। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के ERC 1155 के कॉन्ट्रैक्ट में, बैच मिंटिंग का, कि मैं एक एसेट को एज़ अ बैच मिंट कर रहा हूँ सेम आईडी के साथ, उसकी एक 30 कॉपीज़ है, ठीक? उस 30 कॉपीज़ को 30 ओनर्स ओन कर सकते हैं विद द सेम आईडी। हमें उसकी आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी सिंगल जो उसकी आईडी होगी बस उसी से वो उधर ऑपरेट हो रहा होगा। और ERC 721 जिस तरह सर हम इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा सर जो यील्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था वो पेंडिंग है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे उसके कॉन्सेप्ट ग्रैप्स हुए मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बेसिकली यील्ड फार्मिंग इस तरह होती है कि वही जो हम यील्ड फार्मिंग जो हमारी जो लिक्विडिटी होती है उस पर जो हम इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, उसे यील्ड फार्मिंग उसी के जरिए कॉन्सेप्ट भी रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो मज़ीद इस पे इंशाल्लाह काम रहते हैं वो मैं कंडक्ट करके आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक, और बेहतरीन, थैंक्स फॉर great update. वाचिंग एवरीवन। ब्लॉकचेन फ्रॉम ब्लॉकचेन टीम नूरुल हकीम। थैंक यू सर। This is great, great. Let me give you a few more action items, and you can start tackling this, kind of along the way. Inka, think through which DEX or AMM, and let me actually go somewhere else and then connect it to this request on DEX and AMM. So what I want you to do is I want you to pivot this project. Instead of real estate, we're going to tokenize cars. Okay? So I'm going जी to सर। give you the update, but please feel free to ask questions if you have any questions along the way. Okay? So imagine that we have cars, okay, that we're renting out in the New York area. So Claudine goes, buys 10 cars, and we're going to rent those cars out. Okay? And when I buy the cars, I own all the tokens. Make sense? एग्जैक्टली सर। Okay, so then Zad comes along. Zad is a good friend of mine. We work together. Zad hears me talking about, oh man, I have all of these tokens. I'm renting these cars, and Zad's like, oh, I want to buy some tokens.
And because why does Zad want to buy the tokens? Because the tokens give yield. Jab cars get rented, the profit goes to the people who own the tokens. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. So imagine, like, if Zad buys $100 of tokens, he'll get $15 a year in yield, a dividend, whatever you want to call it, staking. Okay? Because Zad participates in the profits of the business. And so what I want you to do is I want you to start thinking about this. And so start with thinking, we have 10 cars and how many tokens will there be? Think through those angles. And then eventually, if many people like Zad come and want to buy the token, we can create more tokens, buy more cars. So just kind of think through the math. Initially, make it simple. Say that all the cars are the same. Don't complicate it, etc. And think through the tokenomics, etc. And then connect it back to my question that where should we build this, or how should we build this? So Anwar, what I want you to do is I want you to create an architecture map. कि हमें DEX चाहिए, हमें AMM चाहिए, हमें wallet चाहिए, हमें ये चाहिए. What are the different components you need? And make some recommendation. That okay, for DEX we should use sushi swap because that's where most of the trading is happening, right? Yes, sir. Or do you create your own DEX? I don't know if creating our own DEX makes sense. Sushi swap is likely the way to go, but I want you to independently do your research, and I want you to look at where we want to build some of these things, and then from there, I want you to also walk me through the initial money that we have to put into the pool. Is it 10% in the liquidity pool? And this is the part that I have blind spots. I have some knowledge gaps. I haven't gotten this far in my research yet. But when you create so let's say the token is going to be called TOCO, by the way, TOCO. Okay. Okay. And so when this TOCO is issued, so right now, go back to the initial example. Slaudeen had 10 cars, 10,000 tokens, 1,000 tokens. Okay, so there's only 10,000 tokens. Slaudeen owns all of them. Okay, and yes, they're sir. in my wallet, right? That's your initial contract that you create. Okay, then from here we evolve the project. That as the money comes in, so let's say for the first month the money came in, there was $500 in profit. Okay. Then Slaudeen would get $500 of profit in this example, right? Yes, sir. And you can basically say every day the yield comes. You can basically create a smart contract like that. And then from here, what you do is you have to think through how do you create the market now and the liquidity pool and the ratio that you have to put in there. Is it 10%, 15%, 20%? Because that's going to be a significant amount of money, right? So, Anwar, are you following some of this, or any questions or thoughts? No, sir, not right now. I'm just writing down your points so that I can work it out. So please carry on. Okay. Okay, perfect. So okay, keep doing it. And then one other angle, which is different than this, is that think about how we're going to audit the smart contracts. Whatever contract, humans are humans. गलतियां भी होती हैं. And then you've also seen through FTX and what the crypto scandal over the last, month or so, big scandal in crypto. But that doesn't mean crypto is bad. It just means humans are bad, right? Yes. You can use banks, you can use crypto, you can use cash, you can use gold. Crime happens everywhere and will continue to happen everywhere. People use, they do money laundering through banking channels. They do money laundering through crypto. So we had a particularly bad actor in crypto and he did a lot of bad, right? So your smart contracts and auditing them makes a ton of sense, right? So just think through that. Yes. But Anwar, great update, and we'll continue the conversation. Nice work. Thank you, sir. सर द पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए अभी के मिसाल के तौर पे आपने 10 गाड़ियां ली और उसके 10,000 टोकन्स हैं, ठीक? Yeah.
तो सर वो हर एक आईडी के अगेंस्ट हजार टोकन है। फिर आपने बात की लिक्विडिटी पूल की कि हमें पहले वहां पर कितना पुश करना पड़ेगा, तो सर उसको हम उस पर कोई मैच करेंगे इस हवाले से कि हमारे पास जो इनिशियल उसकी सप्लाई है वो फिलहाल कितनी है, और हम कितने अभी हम इंटरेस्टेड हैं उसको सेल आउट करने में, कि हमें अभी फिलहाल और पार्टनर्स चाहिए या हम क्राउड को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस तरफ। और सर बाकी भी जो आपके मतलब जो आपने कंडीशन बताई थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप उसका डॉक फिर सर मुझे मिल के साथ शेयर कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपको मजीद अपडेट कर दूंगा। किसके क्या चीज शेयर कर दूं? सर जो जो भी आपने मतलब एक दिया है कि हमें उसमें डेस्क वगैरह चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी कार के हवाले से, जो टोको का एक टोकन है हाँ उस हाँ, हवाले से, अगर जी सर अगर आपके मतलब मैं फर्दर कोई मैंने कंसर्न सारा वगैरह हैं, नहीं 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 मैंने सारा शेयर कर लिया। ठीक सर। ठीक है, और मैं एक्चुअली एक पिक्चर शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, go ahead. जी सर काइंडली पिक्चर शेयर कर दीजिए। Somebody jumping in? No, I was just confirming to Anwar that I do have all the details written with me. I'll be sharing it with him right after this. ओके सर, दैट्स ग्रेट। ठीक, बेहतर। जी शुक्रिया सर मुझे सुनने Alright, का, Zaman. और अगर मजीद फर्दर कोई हाँ आपके क्वेश्चन हो तो। yeah, and by the way, great update, but this applies to everyone. You guys, everyone has to get onto Twitter. If you're not on Twitter, please get on Twitter immediately. Follow me, follow each other, interact with each other. We have a really cool group of people here working on really cool stuff. So we have to interact with each other on Twitter and make our voice heard. Like let the world see the blockchain work coming out of Pakistan. And when we publicize our work, we're going to build a community, and the community will also be interested maybe in buying our token. So please, everyone, if you don't have a Twitter account, please create it right now. ठीक है, मेरा नाम सलाउद्दीन ख्वाजा ट्विटर पे ढूंढ लें, ठीक है, follow me. If you have a Twitter account and you've not logged in a while, log in right now. Interact, understand what's happening in this space. Even just type in Twitter, crypto for beginners. There's some really, really good people that share amazing content and stuff that you don't know you can learn there. And yeah, cool. All right, sorry, Muzammil, let's go next. Sure. So thank you everyone from the real estate part, and appreciation for Anwar that it was really good. And Salah, just to mention that Anwar is from a medical background and he hasn't started his bachelor's yet. And still to achieve this much is, I guess, a lot. And that's great. Yeah, very impressive, man. Very impressive. Yeah. Okay, so I guess we are done with the real estate part for now, and we have Samina and Umair from the UX team from the other part. So basically, you have so that's the NFT one, and you had asked them about some licensing and the GPT-3 thing. So they'll be sharing their research on that. So Umair, Samina, whoever it is, please share your screen and go ahead. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. This is Samina Abdul Kalam from UX team. I'll be sharing my screen. Okay, let's do it. Let me know if it's visible or not. Yep, it's up. Okay. So basically, we had a meeting in which the insights were these. We had to, add the पेमेंट मेथड्स जिसमें हमने अल्केमी मून पे आपने एप्पल पे ऐड करने का कहा था और ऑल दीज बट वी डिडंट ऐड गूगल पे और एप्पल पे बिकॉज जिस पे हम काम कर रहे हैं दैट इज़ Web3 और जो ये प्लेटफॉर्म्स है गूगल पे और एप्पल पे दीज आर Web2 प्लेटफॉर्म्स तो हमने ये ऐड नहीं किया अदर देन दैट वो हमने आगे काम किया दैट आई विल बी शोइंग यू लेट मी जस्ट ओके अगला हमारे पास था कि हमने CDA चेंज करना था दैट वॉलेट इनटू वॉलेट और कनेक्टेड दैट द थर्ड पॉइंट वाज टू रिसर्च ऑन GPT-3 और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के ऊपर तो हमने इसके ऊपर काम किया है एंड द अचीवमेंट्स वर द फर्स्ट वन इज स्क्रीन्स फॉर कस्टम वॉलेट द बिफोर एंड आफ्टर हमने पहले मेटामास्क और ये सारे वॉलेट्स रखे हुए थे बट हमने जो है उसको फिर आपकी लाइक आस्किंग के मुताबिक हमने इसको चेंज कर लिया एंड फॉर द रीज़न ऑफ नॉट एडिंग गूगल पे एंड एप्पल पे वाज लाइक दे वर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स
The second objective was to change the CTA to wallet plus like slash connected, that this would be showing कि ये connected है कि नहीं connected. और in our like project हमारे पास explore का option है, जिससे अगर आप connect नहीं भी करते हैं, that you can explore and know about what is NFT और उसकी background क्या है और उसका concept क्या है. तो वो हमने अलग से उसका CTA रखा है, जो कि हमारे पास onboarding में आएगा, like landing page के ऊपर आएगा. The third was to research on Creative Commons license, जो हमारे पास हमने रिसर्च की है और हमने ये यूज़ भी किया हुआ है. तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि हमें और जो उनके जो क्रिएटर्स होते हैं, लाइक जो जिनमें एसेट डला हुआ होता है, वो हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. फॉर आवर प्रोजेक्ट वी यूज्ड पैक्सेल्स, अनस्प्लैश, पिक्साबे, फ्री इमेजेस और इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें लाइक पिक्चर्स, वीडियोस और इस तरह के एसेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट वी हैव द परमिशन टू यूज देम विदाउट एनी कॉपीराइट्स एक्सेट्रा. So that was it. And moving forward, the research we had to research on GPT-3. It's a very new and modern concept and it is very interesting concept, जिसमें हमारे पास जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं that are using this software and that are using this concept, जिससे हम क्या करते हैं कि जो यूज़र है वो इन टूल्स को, इन वेबसाइट्स को लाइक डेटा प्रोवाइड करता है, एक रेफरेंस डेटा, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमें आउटपुट जनरेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, आर्टिकल्स, पोइट्री, like we can edit our videos, we can generate text, like copywriting, we can do copywriting even if we don't know about it, everything we can do so much through this. Like हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है जो कि डॉल ई टूल से है, वेबसाइट से है, जिसमें हमने लाइक इस वेबसाइट से बात की है. ठीक है, हमने इस वेबसाइट को बताया है दैट वी वांट अ फुटबॉलर वॉकिंग ऑन अ नियॉन सिटी और दीज आर द आउटकम्स वी गॉट. और ये बहुत यूनिक है और मतलब ये लाइक वी कैन यूज इट विदाउट एनी इशू अबाउट कॉपी राइटिंग और इसका. और ये जो है किसी और को ये रिजल्ट्स नहीं देगा, वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगा. ठीक है, और इसको हम जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जो भी हम जनरेट करना चाहते हैं, वो हम इन वेबसाइट्स को बताते हैं, उनको डेटा देते हैं और वो हमारे साथ उसको अपने AI के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू डेटा कलेक्ट करके हमें वो आउटकम देता है. इसके साथ हम इनसे बात भी कर सकते हैं. हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. ये जो टूल है वो डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामर्स और मैनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में दीज थिंग्स आर हेल्पफुल. नेक्स्ट हमने जो है इसको टेस्ट ऐसे किया है, हमने डॉल वेबसाइट को यूज़ करते हुए, टूल को यूज़ करते हुए हमने उसे लाइक एडिट भी कर सकते हैं. हमारे पास जो हमने आउटकम दिया, हमने उसको एडिट करने के लिए वी आस्क्ड इट कि ये स्पॉट है और यहाँ पर हमें एक डिजिटल कलरफुल मून चाहिए, और उसने बस हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मून जनरेट कर दिया. सो इट्स वेरी ईजी टू एडिट, इट्स वेरी ईजी टू यूज़. तो वी जस्ट हैड टू गिव सम ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा और वो हमें आउटकम दे देता है. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये काम कर रही हैं, दैट आर डॉल ई, ये इमेज जनरेटर है, वेरिएबल फीडबैक एनालिटिक्स, ठीक है, कॉपी स्मिथ, ठीक है, इस तरह की ये सारी वेबसाइट हैं जिसमें हमारे पास कंटेंट राइटिंग हो रही है, जिसमें हमारे पास इमेज जनरेट हो रही है, वीडियो एडिटिंग का काम हो रहा है. देन इसके साथ साथ हम लाइक समराइज कर रहे हैं कंटेंट को और मतलब मिस्टेक्स वगैरह क्लियर कर रहे हैं, प्लेजरिज्म रिमूव कर रहे हैं. बहुत कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में जो कि AI के थ्रू और GPT-3 यूज़ करके हो रहा है. तो दैट वाज इट फ्रॉम आई साइड. लाइक जो हमें कहा गया था प्रीवियसली वी हैड प्रेजेंटेड द इंटरफेस वगैरह. अगर अगेन करना है तो देन आई विल शो यू द प्रोटोटाइप एंड डिज़ाइन. थैंक यू फॉर दिस. Do I need to share the prototype, like the design? Thank you so much, Samina. So I guess maybe we are good if Salah wants. Otherwise, I can just give an overview. So Salah, this is basically the NFT marketplace part. And the ask regarding the common license was basically that since there weren't any designers, so the students were using the NFTs from other places, which is why you had asked them to research on this common license. And then you also asked them to research on GPT-3 so that if they can use like generate such pictures or NFTs or animations from there, as Samina had been showing, and then they can use it on the platform. So yeah.
So एक काम करें Samina, maybe do the quick 1-minute overview of the NFT marketplace. And we have Varda here, who's a guest attendee. Varda runs a couple of nonprofits and does amazing work in the edtech space. And she's also doing her undergrad at LUMS, very accomplished person, professional, student, wears many hats. I've gotten to know her over the last 6 months or so through IEC actually, because she runs a computer lab there. And so Samina, and we'll get Varda to maybe introduce herself towards the end when we finish the updates. But Samina, maybe if you just give us an update on NFTs and the work you're doing on Marketplace, because Varda, I'll connect the dots with how the NFTs can help you with your development efforts in raising funds, etc. And so just hang in, Varda, just a bit. Samina, over to you. Okay, so just let me just open the file. I will be explaining it more clearly. So basically NFT that what we were working on, NFT is an asset and a non fungible token, ठीक है, जिसको हम जो है किसी भी फॉर्म में जो है जनरेट कर सकते हैं. दैट कुड बी एन आर्ट, म्यूजिक, इमेज, वीडियो, जिफ, व्हाटएवर. उसको हम टोकनाइज कर देते हैं एंड देन जो है हमारे पास वो एक डिजिटल एसेट बन जाता है जो हम एक मार्केट प्लेस में गैलरी में शो करवाते हैं और यूजर उसको बाय कर सकते हैं और ये वन प्लेस टू अनदर जाता रहता है. जो टोकन होता है NFT का जो होता है ये यूनिक होता है और इसका एक ही जो जो उसका ओनर होता है वो एक ही होता है और स्पेसिफिकली यूनिकली एक ही पर्सन उसका ओनर होता है और वो उसको अपने हिसाब से आगे अपना प्रॉफिट रखते हुए आगे उसको मजीद सेल कर सकता है. ठीक है, तो दैट वाज आवर वर्क. हमने वेबसाइट जनरेट की है जो मैं आपको दिखाती हूँ. हमने एक NFT गैलरी बनाई है जिसमें हमारे पास डिफरेंट NFTs होंगे और ये NFTs डालेगा कौन, एक एडमिन होगा, उसकी NFTs होंगी और वो यहाँ पर डालेगा. और जो यूजर होंगे डिफरेंट वो इस मार्केट प्लेस पर, लाइक इट इज नॉट अ मार्केट प्लेस, इट्स जस्ट अ गैलरी. ठीक है, मार्केट प्लेस में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट NFTs डिफरेंट प्लेसेस से आ रही होती हैं और वो एक मार्केट प्लेस में डिस्प्ले की जा रही होती है. लेकिन ये जो हमने वेबसाइट बनाई है ये मार्केट प्लेस नहीं है, इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ गैलरी स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, जिसमें जो एक एडमिन होगा वो जो है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो NFT को लाइक मार्केट कर सकता है, यानी कि लाइक सेल पे लगा सकता है. बट द यूजर हु इज कमिंग, लाइक वो अपनी NFT यहाँ पर लाइक ऑक्शन पे नहीं लगा सकता. he can just buy or explore or stuff like that, but the admin can do that और वो जो है उसको ऑक्शंस पे लगा सकता है, उसको सेल पे लगा सकता है. सो दिस इज आवर लैंडिंग पेज जिसमें जो है ये हमारे पास कॉमन लैंडिंग पेज है जिसमें हमारे पास यूजर भी आ सकता है और एडमिन भी आ सकता है. फर्स्ट मैं आपको यूजर का दिखाती हूँ दैट इफ ही डजंट नो अबाउट NFTs और उसके बारे में, तो देन जस्ट ही कैन जस्ट एक्सप्लोर. ये हमारे पास CT है तो वो एक्सप्लोर कर लेगा NFTs को, देखना है वो NFT देख लेगा, हाउ इट वर्क्स उसको देखना है वो देख लेगा. NFT के बारे में और मालूमात इकट्ठा करनी है तो ही कैन जस्ट डू दैट. ठीक है, बट इफ आई वांट टू बाय एन NFT फ्रॉम दिस गैलरी आई हैव टू कनेक्ट वॉलेट, जिसको मैं कनेक्ट करूंगी देन वी विल हैव द वॉलेट्स जिसमें हमारे पास डिफरेंट वॉलेट्स हैं. मैं मेटामास्क से फिलहाल कनेक्ट कर लेती हूँ तो मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, and now that this CTA it works. ठीक है, then again नीचे हमारे पास updates होंगी that what are the NFTs in future which are going to be on this gallery. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा conceptual वेबसाइट थी जिसमें हमने फुटबॉल को बेस बनाया था. दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ी सी उसके बारे में इंट्रो और थोड़ी सी मार्केटिंग है. अदर देन दैट हमारे पास नीचे हमारे पास NFT स्टोरी होंगी जिसमें हमारे पास NFT बाय कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं बाय पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा वॉलेट. अदरवाइज इट वुड बी आस्किंग कि आप अपना जो है वॉलेट वो कनेक्ट कर लें. देन मैं बहुत सिंपल सा यूजर फ्लो है कि मुझे 1-2 क्लिक्स में मैं अपनी NFT जो है बाय कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा वॉलेट कनेक्टेड है. अगर मेरा वॉलेट कनेक्टेड नहीं होता इसके पीछे जो हम देखते हैं कि हमारा कार्ड का और ये जो फंक्शनिंग होती है नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट मेथड है वो डिफरेंट है. लेकिन इसके ऊपर हमारे पास बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन इसलिए हो रही होती है क्योंकि वॉलेट का खुद का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे पास डिजिटल एसेट्स या डिजिटल जो हमारे पैसे कह लें, कॉइन्स कह लें, वो हमारे पास पड़े होते हैं. तो वो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं जिसको हमने जस्ट कनेक्ट किया है. नेक्स्ट हमारे पास ये न्यू यूजर्स के लिए और इमेच्योर जो यूजर्स हैं इस टेक इंडस्ट्री में उनके लिए कि वो
like they get to know what the NFT is और उनको कैसे connect करना है उसको at the end उनको कैसे you know खरीदना कैसे. Next हमारे पास थोड़ा सा टीम का थोड़ा सा हवाला है और उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन है FAQs का जिसमें एक सवाल जवाब होंगे कि user wants to know more about NFTs or the Connect wallet or anything specifically about NFTs तो वो उसके बारे में जान सकता है. Then other than that we have a NFT page जिसमें हमारे पास सारे NFTs showcase होंगे जिसको हम filter out कर सकते हैं, जिसको हम favorite में डाल सकते हैं. और हम bundleize का एक concept हमने इसमें generate किया था कि हम अगर चाहें तो यूजर को एनकरेज करने के लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम 3-4 NFTs को कंबाइन कर लें, उसका एक पैकेज काइंड ऑफ बना लें और उसमें हम फॉर द टाइम बिंग हम उसमें सेल टाइप का कॉन्सेप्ट डाल दें कि फॉर द टाइम बिंग अगर आप उसको ले लेते हैं इतने दिन के अंदर देन यू विल गेट यू नो उसको आप कम अमाउंट में या कम ऐसे खर्च किए आप उसको ये खरीद सकते हैं. जस्ट लाइक द सेल वर्क्स सेम इसी तरीके से. तो हमने ये कॉन्सेप्ट इसमें डाला था. देन अदर देन दैट वी हैव प्रोफाइल जिसमें जो यूज़र की प्रोफाइल होगी कि उसमें जो उसने सेल पे अगर ये तो एडमिन के लिए होता है कि उसने सेल पे क्या क्या लगाई हुई है क्या क्या नहीं लगाएगा. और फेवरेट्स में तो यूज़र भी डालेगा तो ये फेवरेट्स का पेज है. और इसके साथ हमारे पास यूज़र का फ्लो है एक जिसमें यूज़र लाइक ये जो एडमिन है एडमिन अगर लॉगिन करता है क्योंकि वो तो NFT मिंट भी कर रहा होगा यानी कि वो ऑप्शन पे लगा भी रहा होगा तो वो उसका क्या फ्लो होगा मैं उसका भी फ्लो आपको दिखा देती हूँ. Give me a sec. Yes. So I think Samina, this is good. I think oh so let me ask you and is my connection bad or is Samina coming in and out? Am I audible? Am I clear or? Okay. Yeah. So Samina is coming in good. Yeah. Salah, I can hear you too. I cannot hear me, or is the connection bad? Yes, Salah, I can hear you. Ajay, Muzammil, you can hear me fine. Samina, is it your connection? Can you hear us now or no? Yeah, I can hear you now. It was. Okay. So Samina and the rest of the team, let me ask you a question, and I'll give you a bit to think about it. If you had to do anything on NFTs to kind of make money, sell art, generate revenue, how would you do it? So let me repeat the question. NFTs is a marketing technique, it's a community building technique, and there's a few other things you can do, but you can also make money and revenue, right? So open-ended question, how would you make revenue? How would you generate, dollars or rupees on the NFT strategy? So just think through it. Let me now connect the dots, Varda, with the work you and I were doing, and then we'll give the team an opportunity to answer that question, and then spend a bit of time on XWave, and we'll introduce the team to that also. But Varda, just to recap some of the context, right? I've shared this with the team here, and I think with you, but just to recap it, the way I think about NFTs is that 90% of NFTs, like think of NFTs as digital art that you have ownership of. So 90% will be bad digital art, like like some kids' drawings, just random scratches, etc. Right? And nobody's gonna care about 90% of NFTs. 9% are going to be beautiful digital images, and people will want to own digital images, just like people own physical images. People own the same photograph. Like big photographers sell the rights to the first 100 copies of their famous pictures, and people buy that for millions of dollars. And the photograph is exactly the same, but it sells for millions because it's got a number to it, right? So 9% are going to be beautiful digital art, and 1% is actually a gateway into a new world. And this is Varda where the XWave strategy started, right? Which was that we want to create a picture. We had created some images that I think you might have seen along the way. I can resurface some of that. It's basically a markhor, and we wanted to sell markhors to Pakistanis abroad.
And the idea was that they would buy these digital images or digital art, and it would act as a fundraising mechanism for us to help the flood affected folks with teachings and with technology, vocational training, exactly like the team you see here, except for the flood affected. And so we were going to use that as like a seed investment. I have a large number of friends in, in the tech sector all across the US. Can I convince 10 of them, 15 of them, 50 of them to spend $1,000, buy an image, and then $1,000 go to flood impacted, affected people? And that was the vision for X-Wave. And I see some interesting overlap between what this team is doing and what Varda, if you're going to be kind of leading some of this work, this is going to be an interesting part of your agenda also. So let me pause, and Varda, maybe you want to share some thoughts, and then we can come back to the team on NFTs. Let's just switch gears. Varda, maybe you want to introduce yourself and connect the dots and share some thoughts. I'll put you on the spot if that's okay. Yeah. Hello, everyone. This is Varda, and I'm currently a student of law at LUMS. Other than that, I have been with. Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Yes. Maybe restart it. That'll be okay. Great. Yeah. So, hello. So, I'm doing law from LUMS, and then other than that, I've been working in the social sector for past 5 years. We have done several projects related to education. But and we lost you. Right now, we. Can others hear me? No, you are clear. I guess I it's think at your it's end. Salajan. Yeah. Okay. So, so we have been right now we are running a community center in Laya where we are working on different skill trainings and vocational training programs, and alongside that we have a library where the community comes to I think it's my learn, connection. and they come and maybe keep going. Yeah, so they come and read different books, and then we have different community activities as well. So I just heard all of you presenting the work that you are doing, and I've been in touch with the IEC students before as well. Some of students from Laya also joined IEC, and it's remarkable work that IEC is doing, and I'm just so inspired by all the presentations today, and it just amazes me how a small intervention can change, can has the potential to change lives. And I think your work is going to go a long way, and I'm very excited to see how we can train more young people like yourself to come into this field. And as Stella mentioned, that you all should create a account on Twitter and tell the world about the work that's happening in Pakistan in the blockchain field and anything that's happening in Pakistan. So I'm really looking forward to work with more young people like yourself and see how we can scale this impact. Great. Varda, sorry for the connection issues. But Samina, actually, Varda, what are your thoughts? Maybe I'll put you on the spot. Another question for you before we go back to Samina and team. What are your thoughts about the NFT strategy and how? I know it's new to you in some of this crypto stuff, but do you think, I know you've raised money successfully for other projects. What do you think about NFTs, and is it, or maybe it's too early for you to give an opinion, but if you have some raw thoughts on NFT and how it can help fund X-Wave, etc. Yeah, I think so. If we talk about so I've read a little bit about NFT so far since I got engaged with the X-Wave, and we did the I talked to Aruba as well, so we tried to make a design as well. So I believe and then I searched the market. I searched that OpenSea website, and then I saw that there is a huge potential in NFTs around the world. People are really willing to buy it. It's just that it hasn't started exponentially in Pakistan yet. But I think if we market it properly, then people in Pakistan will also be willing to buy it, and we can fundraise through NFTs. And like it has a great potential. Even if we don't start from Pakistan, if we start outside Pakistan, people are very excited about NFTs, and it can give us I guess a quick start in terms of fundraising. Yeah, love it. That's exactly the goal. Yeah. Create the exposure here, especially with the tech community.
So just say you're investing $1,000 in Pakistan, right? You're getting a free NFT with it. Okay? Yeah. And then use that as a launch Yeah. pad to kind of think through other angles. Samina and team, any thoughts on NFTs and your projects and where you want to take it? Samina, can you hear us? Hello, am I audible? Yes, you are now. So yeah, sir, in my idea we can just I've been working on some projects जिसमें हम जो है shops को digitalize कर रहे हैं. तो I think we can connect this NFT concept with that, जिसमें हम जो है like it is a concept basically जिसमें हम क्या करते हैं, normal examples मैं आपको समझाऊं तो we have a market digital, जैसे एक mall होता है, इसमें different shops होती हैं जिसको हम लोगों को rent पे दे रहे होते हैं, that they can grow their businesses, और उसमें आप clothing brands लगा दें और different stuff, उसको हम digitalize करके एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम डिजिटल कर देते हैं उस शॉप को, और वो कोई जो बंदा है वो ऑनलाइन उसको रन करता है. तो हम वो शॉप के एसेट को भी टोकनाइज कर सकते हैं इस एनएफटी के कॉन्सेप्ट से, कि जो हम उसको इस लाइक एज अ टोकन उसको हम ये शॉप देंगे, डिजिटल स्पेस देंगे हम अपनी ऐप के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर, जहां पर आके वो अपना जो भी उसका बिजनेस है वो उसको शोकेस करे, और ऑब्वियसली वी विल चार्ज हिम, जो अगला बंदा है उसका बिजनेस उससे रन होगा, और इसको हम एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के तौर पे इसको लाइक यूज कर सकते हैं. आई इज जस्ट अ आइडिया. Yeah, I think इस पे continue to work on it. ठीक है. Ideas sometimes take years to take shape. ठीक है. इसमें the thing that you have to think through is how many people in Pakistan are familiar with Binance, right? And there's a lot of people, by the way. Like एक stat कोई कहता है कि 7 million है, कोई एक और stat कहता है 20 million people. And you have to figure out कि उन लोगों से like बात करो. And you do the user experience research to understand कि वो, and then kind of work on this idea. In the meantime, I would love for you to kind of think through with Varda and team to how to create the NFT for X-Wave and launch it. And Varda, I'll leave this kind of action with you also, right? That you can work with the team over here, do an offline session, understand the technology they've built on the marketplace so far. My team in Declaration has also done some work for a client. We should introduce you to them also, and maybe Muzammil, you can do that. It's actually, Mehak, you're on, right? Oh, Mehak's on. Yes, we have Mehak on call. Hey, I'm on. Actually, just I would basically rather connect with Mehak. Mehak's based out of the UAE, and she does some really, really good work at Declaration on a bunch of different projects. She's been co-leading a project around an NFT marketplace. Maybe she can kind of do a demo of that with you. You can do a demo with this other team here with Samina and others, and Muzammil can organize that, and then kind of chart out a path, right? And maybe Mehak, if you like, just connecting the dots at the beginning of this conversation, we're trying to put this webinar onto YouTube and stuff. So maybe when you meet with Varda, maybe the first 5, 7, 8 minutes, Osama and team, yourself, like you can do a couple of slides, Osama can do it, whoever else, make it a bit more scripted. So the 5 to 7 minutes, we can put it onto YouTube around our capabilities around NFT marketplace, and obviously let the client know that we're thinking of doing, this, and hopefully he's okay with it. Okay. Then the other thing, Anwar, if you're still on, I forgot to mention to you, when you pivot towards the car side of things, there was great work that the team had done around UX research and that whole Figma file, right? It was real estate tokenization ka tha, Muzammil, that I was super impressed with right at the beginning of this project. We need to recreate a version of that for the car side of things. And Zed is on from the Hypermode team, okay? And he, Declaration, Hypermode are the same businesses, I guess, but he can connect with the team and basically think through that angle on how we convert the real estate tokenization page into a car sharing or car tokenization page, right? And so, Zed, I'll leave that with you if you can follow up on that. Yeah, sure. That would be really interesting. Yeah, and you have that Figma file, right, Zed?
Yes, you shared the link with me. I have that. Okay, perfect. Okay. All right, team. This was a really good update. Every time I think I'm 60 minutes to khatam karenge, we get into the details. It's super exciting. You guys are doing amazing work. Muzammil, big thanks for emceeing all of this. Nice work. Anything? I don't know. Last minute questions, thoughts from anyone? Okay. Chalo pe. Good luck with everything, and let's keep connecting. Maybe Muzammil, let's make this a bi-weekly meeting, or maybe even a weekly meeting, right? And we can kind of figure it out and just talk amongst each other, and people can give updates in their respective areas, right? Sure, we can do that. We can do that. We can just orchestrate around that and then see how it goes. Yeah, just make it a weekly meeting. This entire team, right? There's a bunch of different action items. People can follow up every week, and then we're good to go. Sure. Thank you. Chalo. Thank you, guys. Bye. Bye. Bye bye. Allah Hafiz.